देखो, मॉड्यूल मॉड्यूल 1 2 तो खत्म हो गए, अलॉन्ग विथ नोट्स। मॉड्यूल 3 का भी नोट्स शेयर कर दिया। नेक्स्ट मॉड्यूल है टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करना है, प्रेशर का मेजरमेंट, वेलोसिटी, फ्लो, स्ट्रेन, फोर्स, टॉर्क। यही जो 5, ये कितना है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ही पढ़ना है। समझे या नहीं रे? यानी कि सर कौन ये मॉड्यूल 3 का नोट शेयर किए हैं आप? मॉड्यूल 3 का नोट्स तो शेयर किया गया था। आपका सिर्फ जो जहाँ तक एग्जाम में था वह तक शेयर किया गया है। समझे? आपका जो ब्रेक, क्लॉज, कपलिंग आज मैं शेयर कर लूंगा। ओके समझे? ये जो लास्ट पार्ट था जो डिस्कस कर रहे थे, जो आपके क्लास टेस्ट में के पोर्शन में नहीं था, उसका नोट्स शेयर नहीं किए हैं, उसको हम शेयर कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं। आपका जो मॉड्यूल 4th में है, ये जो सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टू मेजर टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी, फ्लो, स्ट्रेन, फोर्स, टॉर्क, यही इंस्ट्रूमेंट का आपको वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि डायग्राम विथ वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। समझे रे? तो इसको पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर, एक मॉड्यूल ही बचा है। मॉड्यूल 3 आप सब देखो, आप लोगों के सामने है। आप यहाँ से पूछ सकते हो कुछ क्वेश्चन है या नहीं। हम नहीं तो लास्ट जो 3 पार्ट पढ़े थे उसको थोड़ा दिखा देते हैं। कपलिंग, क्लॉच, ब्रेक का कपलिंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, आप तो पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। क्लॉच ब्रेक का हम दिखाते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे मॉड्यूल 4 में। सर मॉड्यूल 3 का नोट तो ग्रुप में नहीं है। सर, नहीं है, शेयर ही नहीं किए हैं आप। अरे कैसे बोल रहे हो, हम तो दे दिए। आपके नॉन ऑफिशियल ग्रुप में शेयर किया गया है। नॉन ऑफिशियल में हम नहीं है। तुम नहीं हो? हाँ सर, ऑफिशियल में। ओ, ऑफिशियल में क्यों है कि हम उसका जो नोट्स शेयर किए थे आपका। आदित्य है क्या ग्रुप में? आदित्य बेहरा है? अभी है आदित्य बेहरा? अभी अभी नहीं है सर। नो सर। नो सर। ठीक है, आप जिसको नहीं मिला है वो आदित्य बेहरा से बात करो, वो आपको भेज देगा। समझे? ओके सर। क्योंकि हम वो जो एग्जाम से पहले दिन हम उसको दे दिए थे, उसमें क्या है, आपका ऑफिशियल ग्रुप में ऐसा चीज हम शेयर करना चाह रहे हैं जो चीज में एक्चुअली उसका करस्पॉन्डिंग 2-3 ठो अटैचमेंट में हम भेजे थे नोट्स के, उसको आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। इसलिए सोचे कि ऑफिशियल में ना के और नॉन ऑफिशियल में डालने के लिए, तो इसीलिए हम दे दिए थे आदित्य को। वो आदित्य के पास है, आप उसको पर्सनली टेक्स्ट कर लो, वो फॉरवर्ड कर लेगा। समझे? आप- अरे am I audible? यस सर। और कुछ दिक्कत नहीं है तो ये कपलिंग वाला नोट्स हम देखते हैं, रुको। सॉफ्ट कपलिंग, ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया था नहीं? ये पिछले क्लास में पढ़े थे ना, कपलिंग खत्म हो गया था। और जो क्लॉच और ब्रेक का मटेरियल आपको चाहिए था, हाँ, क्लॉच और ब्रेक। चलो उसको थोड़ा और देख देते हैं एक बार, उसके बाद ये तीनों का नोट्स में शेयर कर लूंगा अभी। देखो, जो जो इसमें बहुत सारे जो पोर्शन है जो एक्चुअली क्लॉज के रिलेटेड है सब, मगर आपको सिर्फ विथ नीट स्केच ये इसका कैसे काम कर रहा है उसको ही याद रखना है। ठीक है? सो क्लॉज के डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके थे, क्लॉज के। ओके, क्लॉचेस इन ए मोटर व्हीकल आर ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। ओके, दे आर सम डिफरेंस इन लिंकेज। ये वाला तो आपको याद नहीं रखना है, जैसे कि हम डेफिनेशन दिए थे आपको, टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट और एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द इंजन टू
डाटा ट्रांसमिशन बॉक्स, ये उसका टाइप से पढ़े थे। सिंगल प्लेट क्लॉथ्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन मोस्ट मॉडर्न लाइट व्हीकल्स। ये वाला इसका डायग्राम है सिंगल प्लेट। आपका ये जो चीज हम अभी शेयर कर रहे हैं इसी के चलते इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है, जो आप कर सकते हो ड्राइंग, समझ रहे। मल्टीप्लेट क्लॉथ में देखो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया है, समझे। ये जो कोन क्लॉथ था, एक पोर्शन जो कोन एक कॉप शेप का होता, सेंट्रीफ्यूगल क्लॉथ पढ़े थे, वहीं तक आपके सिलेबस में है, ये वाला नहीं है, इसका डायग्राम के थ्रू पढ़ना है। और जो ब्रेक भी पढ़े थे ये मॉड्यूल 3 का पार्ट है। ब्रेक किस लिए यूज होता है, ब्रेक का टाइप क्या होता है, समझे। सर आवाज नहीं आ रहा सर। ओके, ये जो है आपका, जैसे कि हम पढ़े थे, क्लॉच इज used to engage and disengage engine from transmission system. So brake is used to your to stop the vehicle. Brakes are provided. So by pressing the brake, you can stop vehicle easily. It's as simple as that. Okay. So basically, brakes are applying on the wheels to stop the vehicles. ये वाला उसका arrangement है, देखो किस तरह ये. So two distinct function of the brakes are to stop or slow down the vehicle in shorter possible distance in emergency, and to control the vehicle to be maintained when descending a hill. Okay. So basically for these two purpose we are using brake. I am just revising this important chapters from module 3. So those who have missed also and those who have already attended, you can listen it carefully, so there may be, this may be a revision. Okay. So the first function call for the brake which can apply large braking torque to the brake drum, while the second brakes that can dissipate large quantity of heat without large temperature rise. यानी कि आप जो ये दोनों प्रोसेस करते हो, एक तो टू स्टॉप द व्हीकल इन शॉर्ट पॉसिबल डिस्टेंस, और दूसरा होता है कि आपका जो जैसे कोई डिसेंडिंग हिल होगा, ये सिचुएशन में भी आप जो ब्रेक अप्लाई करते हो टू कंट्रोल द व्हीकल. In both cases, you will find application of a large braking torque as well as your dissipation of large quantities of heat energy. Then these are the types of brakes. So foot brakes or hand brake, internal expanding, external contracting brake, mechanical brake, power brake, vacuum brake, air brake, hydraulic brake, electric brake, self-energizing, power assisted brake. So these are the diagram of your emergency brake. You can push button, that is emergency situation. Okay. So when we are using this, all these types we discussed in the previous class.
This is the mechanical brake. You can see there is a return spring is there, mechanical lever is there, drum is there, brake shoe is there. Okay, this type of brake we commonly find in drum brake. A vacuum brake, this one. This is the disc brake, brake drum. These are the different types of brake we already discussed. Then that's shaft coupling. It is also what in the previous discussed in the previous class. Okay. So these three part I will share with you very soon. Okay. So today we will discuss that module 4. Any question from module 5, 3 you can ask. Otherwise we shift to module 4. Just wait. Collecting some material from that chapter specifically. Measurement of displacement is not in your syllabus. Just wait. Okay. So what is that mechanical measurement here? Measurement. We'll start today. Just wait. Hmm. 426. Okay. So here measurement is your science of measurement is known as a metrology, but measurement is done to know whether the component which has been manufactured as per the requirements or not. Okay. That means measurement इसलिए किया जाता है तो measurement is done to know whether that component which has been manufactured is as per the requirement or not. Measurement will be of mainly basically we measure length, mass, time. That means as in the engineering WhatsApp class you have also measured with help in your engineering drawing class you are also measuring length. Okay. So mass, time, angle, temperature, squareness, roundness, roughness, pressure, all these variables you can measure with some measuring instrument. So basically measuring instrument is
designed to measure certain parameters. You have to remember in this way. Okay. So what is measurement? Measurement is defined as the process or act of a measurement. Okay, or measuring something. Basically, here in this, we will measure your temperature, measure temperature of the system, pressure. Okay. Also velocity. Velocity we measure, flow measurement also, and also then strain measurement. So can you name some device that is used to measure temperature? Can you name some device that is used to measure temperature? बताओ रे. Thermometer. Thermometer works on which principle? Have you ever seen thermometer? कभी देखे हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ How many types of thermometers are there? अरे बताओ रे, हम डिस्कस कर रहे हैं, बताओ. 2 types, sir. Two type of What are they? आप One देखो, हम बार बार बोल चुके हैं कि आप ऐसे आंसर मत दो जिसके चलते आपको फिर क्वेश्चन आ रहा है. देख रहे हो, जैसे आंसर दे रहे हो फिर से क्वेश्चन बन रहा है. बताओ कितने टाइप के थर्मोमीटर होता है? हैं? अरे कितने टाइप के थर्मोमीटर होते हैं? Sir, 2 type क्वेश्चन के नहीं होते हैं. आया. One What are they? सर मर्क्यूरी और डिजिटल थर्मोमीटर. मर्क्यूरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर. एनी अदर टू मेजरिंग टेम्परेचर? ये आपका हो गया जो आप थर्मोमीटर जो बोले, ये जो हो गया लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए. नहीं, जो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? sir infrared ray thermometer. इंफ्रारेड. एनी अदर? हाँ, इंफ्रारेड इज वन टाइप ऑफ थर्मोमीटर. गुड. एनी अदर? अरे एनी अदर? आप नहीं सुने हो ना? अरे नहीं सुने हो या नहीं भूल गए हो? बताओ रे. Pyrometer. Pyrometer is used to measure रेडिएशन High मेजर. temperature. रेडिएशन ऑफ बॉडी. देखो, हम इसको आप ये जो चैप्टर सब अभी पढ़ने वाले हैं, देखो हम तो पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है याद रखना है, मेजरमेंट क्या होता है आपको याद रखना है. हम इधर टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे. तो यानी कि जो कोई भी पूछ सकता है नॉर्मल क्वेश्चन, टेम्परेचर मेजरमेंट से पहले आपको टेम्परेचर क्या है मालूम होना चाहिए. टेम्परेचर तो हम पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं या नहीं रे? मॉड्यूल 1 में टेम्परेचर पढ़े थे या नहीं? यस सर. It is a measure of a degree of hotness or coldness. Temperature is the potential for which heat transfer takes place. So that temperature can be measured, okay, by various temperature measuring devices. One is your thermometer, what you are very much familiar with in your day-to-day life. Am I right or not? Yes, sir. Yes. सर. So what you can assuming that these are the thermometer are basically temperature measuring device. What we can more precisely call, these are low temperature measuring devices. Yes or no?
आप जो थर्मोमीटर में लिमिट देखे हो, मैक्सिमम लिमिट कितना तक मेजर कर सकता है, देखे हो कभी या नहीं देखे हो? नहीं देखे हो तो कुछ दिक्कत नहीं, यानी कि वो भी उतना हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो आपका जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए और जो जैसे टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या होता है? थर्मोकपल के नाम सुने हो? थर्मोकपल। सर पेरोमीटर भी होता है ना सर? अरे सुनो, थर्मोकपल सुने हो या नहीं? नो सर। थर्मोकपल एक होता है, एक रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिवाइस होता है, आरटीडी होता है, ठीक। और एक इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस है, हाँ। और क्या होता है? बाई मेटालिक टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है। और जो फ्लूइड एक्सपांशन टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो होता है, तो आप बोल रहे हो थर्मोमीटर, समझे? उसको बेसिकली क्या बोला जाता है? लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। आपका जो लिक्विड यूज होता है इन ग्लास थर्मोमीटर, समझे या नहीं? सो ये आपका कैसे मेजर करता है टेम्परेचर, आप वो बताओ। वो कैसे टेम्परेचर मेजर करता है जो आपका जो थर्मोमीटर है, वो कैसे टेम्परेचर मेजर करता है, कैसे बताओ रे? हैं? अच्छा, भूल गए हो क्या? आपको थर्मोमीटर जब आपको ला रहे हो, कोई थर्मोमीटर का एक एंड लाके आपके बॉडी के साथ आप टच करते हो, उसके बाद वो जो डिवाइस होता है बॉडी के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, करेगा या नहीं? अरे सुन रहे हो या नहीं रे, बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, वो जब फ्लो करे, जैसे टेम्परेचर फ्लो होगा बॉडी टू वो मटेरियल, वो क्या होगा? उसी के बीच आपका थर्मल इक्विलिब्रियम वो चाहेगा अटेंड करने के लिए। जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा तब जाके वो, जब तक वो क्या होगा, कम टेम्परेचर होगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से हीट फ्लो होगा, तब जाके वो जो लिक्विड उसमें था रहा होगा जो आपके थर्मोमीटर में, वो एक्सपांड करेगा। यानी कि वो उसका एक्सपांशन होगा तो उसका जो हाइट बढ़ता है या नहीं, उसी जो कितना लेंथ तक वो इंक्रीज करता है और कितना हाइट उसका बढ़ता है, वहीं से आपका जो कैलिब्रेट किया हुआ होगा वो थर्मोमीटर, तो वो जहां तक बढ़ेगा वहीं का जो वैल्यू होगा वो आपका टेम्परेचर दिखाएगा। वही होता है या नहीं? यस यस सर। सर। तो ये सब जो होता है ना, ये आपका इसी तरीके से ये आपका टेम्परेचर को बैलेंस करके आपका हीट कितना डिफरेंस है उसको देख के वो तब जाके मेजरमेंट करता है। उसी को बोलते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक। हम आपको जो दिखा रहे हैं अभी डिफरेंट थर्मोमीटर जो होता है आपका, जैसे कि अभी जितने नाम बोले हैं, बाई मेटालिक थर्मोमीटर, ओके, ये वाला सब जो है हम उसका आपको दिखा रहे हैं सब। रुको एक मिनट रुको। दिखा रहे, स्लाइड दिख रहा है, देखो। सर स्क्रीन शेयर नहीं है।
स्क्रीन तो शेयर कर दिया हूँ। ओ सॉरी, रुको। दिख रहा है? सर सर हाँ, इसमें देखो जो आपका एक्सपेंशन ऑफ थर्मोमीटर और दैट लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, जो है हम जो थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। ये बेसिकली ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कैसे टेम्परेचर क्या है वो डिफाइन किया है। और देखो, ये तो आप लोगों को मालूम है, हम भी पढ़ा चुके हैं। When we sit in the sun or near fire, we feel warm or hot. When things are kept on fire, they also become hot. So it is the heat which makes us an object feel warm or hot. Heat is the form of energy which gives the sensation of warm or hot. A body becomes hot when it gains heat energy and becomes cold when it leaves out the heat energy. So the measure of degree of hotness or coldness of a body as defined is called your temperature. So यहाँ पर देखो, when a substance receives heat, the following effects are observed. When a substance जो होता है, देखो जो सब्सटेंस हीट को रिसीव करने से उसका चेंजेस आता है, वो सब तो सब्सटेंस को बोलते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। हम पढ़ाए थे क्लास में, अभी इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सब्सटेंस रिसीव्स हीट ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व। अगर वो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस आप टेम्परेचर के सामने उसको लाओ, हीट जहां पर ज्यादा है, सपोज बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, आप थर्मोमीटर लाए, तो क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन प्रेशर होता है। कौन सा? किसका? वही थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस का। उसी को रेफरेंस लेके हम टेम्परेचर का वैल्यू मेजर करते हैं। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो सकता है, चेंज रेफरेंस, ठीक है। रहते ये वाला जो टेम्परेचर स्केल है, केल्विन सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल है। तो ये वाला जो हम तो कैसे आपको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है वो दिखा रहा है। अगर हम चलेंगे डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर, सो ए थर्मोमीटर इज दैट डिवाइस which measures temperature or temperature gradient using different principle. ओके, सो इसमें कौन सा प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? इट हैज टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट। वन इज ए टेम्परेचर सेंसर, दैट इज द बल्ब ऑन द मर्क्यूरी थर्मोमीटर। आप जो थर्मोमीटर अभी बोल रहे थे उसका एक बल्ब है, इन व्हिच सम फिजिकल चेंजेस ऑकर विथ द टेम्परेचर प्लस some means of converting that physical changes into a value. Example, that scale on the mercury thermometer. Industrial thermometers commonly use electronic mean to provide a digital display or input to a computer. That means like your thermometer, liquid in glass thermometer. Similarly, digital thermometer using electronic mean is also now available, which display its value in a screen. Okay, digitally it will show in the screen or digital display or input to a computer. Expansion thermometer, change of state thermometer, that means pressure or your volume. Electrical thermometer, radiation or optical pyrometer. So what is that expansion thermometer? In which most solid and liquid are expand when they are subjected to an increase in temperature. So the direct observation is an increase in their size in terms of, that means a increase in length. This is used to indicate temperature in many thermometer. You can see here, these are the different liquid in glass thermometers are there. That liquid in that different color, when it is in contact with that body whose temperature is to be measured, then that liquid in that
tube, glass tube expands. So once it reaches that height from there, you able to measure the temperature. So you have to remember that liquid in glass thermometer utilizes the variation in volume of liquid in reference to your or with respect to temperature. They use the fact that most fluid expands on heating, and from that variation of volume, that means if that volume is increases, that means you can conclude that your temperature is more, and if it is volume is less, you can conclude that there is less temperature. So liquid in glass thermometer used since very long years ago, and most commonly used liquid are mercury and also alcohol. So let's zoom this diagram and see. Sorry. Here you can see that expansion chamber up to this one, it can expand. There is auxiliary scale is there. It is measuring temperature in reference to your ice point and the steam point. Okay. This is your main scale. Okay. There is some contraction chamber is there, and this is called your ball. This ball contains that liquid, that is maybe mercury or alcohol. So it comes in contact with the body whose temperature is to be measured. So then this liquid in this ball expand, and from this height of here we can conclude that what is the corresponding temperature. You can see these are the different part of that thermometer. That ball is acting as a reservoir holding the liquid whose volume changes with the temperature. That means this ball basically used to hold the liquid. That means your thermometric fluid, okay, or thermometric substance whose volume changes with the temperature. So the ball also act as a sensor. It acts as a sensor also or gauge, which is inserted. Told you that this ball portion in this thermometer is act as a sensor, and that part is introduced to the body whose temperature is to be measured. And that stem, this part is called your stem. After that ball, the rest part of your thermometer is termed as a stem, which containing the scale. That means there is a scale is also calibrated, graduated also to certain values, and measuring temperature, and a capillary through which that fluid expands and contract. So one is your main scale, another is your auxiliary scale. Advantage here it is these are cheap to manufacture, easy to carry and handle. As thermometer, you remember these are cheap to manufacture, easy to carry and handle. Disadvantage is that it is having high heat capacity, so they are not sensitive enough. High heat capacity. What is the meaning of heat capacity? Who can tell? What is the meaning of heat capacity? Who The can amount define? of the amount of heat consumed in a device or in a system Not consumed. It is contained. or content. कितना होल्ड कर सकता है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी. सपोज वन बॉडी आप देखो बहुत देरी के बाद ठंडा होता है. आप देखो कोई भी अगर आप कोई बॉडी रखो धूप में
अब कुछ देर बाद वो ठंडा होता है और कुछ कुछ जल्द ठंडा हो जाता है, बाद तुरंत ही ठंडा हो जाता है। समझ रहे हो या नहीं? और वन बॉडी कूल्स फास्टर, वन बॉडी कूल्स स्लोअर। इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? यानी कि जो बॉडी लेट में कूल होता है उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो यानी कि हीट को ज्यादा देरी तक होल्ड कर सकता है। समझ रहे हो या नहीं? यस अरे सर। समझे, समझे तो हाँ, हीट कैपेसिटी मतलब एबिलिटी of the body to store heat within it. Hmm. So they are not sensitive enough as it's a high having high heat capacity. So they are not sensitive enough. So आप कभी जो थर्मोमीटर देखे हो, जो आप कभी डिजिटल नहीं तो जो आपका ग्लास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है, आप उसको पहले लाते हो उसका जो लेवल तक, उसके बाद उसको बॉडी के में इंसर्ट करते हो आप उसको ऐसे पुश करके। So they cannot use to measure rapid temperature changes. This mercury in glass thermometer is the same. So as discussed, that means due to a high heat carrying capacity, heat capacity, these are not used to or give the accurate result. So to increase that sensitivity, that means more sensible towards the temperature as it is exposed to temperature, there should be a sudden changes in that volume of the thermometric substance. So this to increase that sensitivity, so usually bulb of mercury at the end of thermometer of the mercury expansion and the sensitivity बढ़ाने के लिए भी उसके अंदर जो ट्यूब होता है उसको भी आपको बहुत ही नैरो कर सकते हो। नैरो बोर मीन्स उसका डायमीटर। Then the space above the mercury may be filled with a nitrogen or it may be vacuum। यानी कि आप वो जो थर्मोमीटर यूज करते हो उसके जो मर्क्यूरी के ऊपर का जो पोर्शन होता है यू में फिल्ड विथ नाइट्रोजन और भी वैक्यूम। ओके, आप उसको भी फिल करोगे तो उसका सेंसिटिविटी भी अच्छा रहेगा। सो इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो जैसे कि ये थर्मोमीटर मेजर कर सकता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू आपका 356 डिग्री सेंटीग्रेड। एडवांटेज, मर्क्यूरी इज नेचुरली ओपाक लिक्विड। ओके, यानी कि वो सिल्वर ही दिखता है, तो इसके चलते आपको इजीली यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। So this means that it can be directly utilized in pure form also, as it is a naturally opaque liquid. So we can use it directly also, and we are also using, okay, earlier and also in the lab classes you will find we are using also mercury in its pure form. Mercury does not weight glass, as you have already learned in your class 2 physics. That is one of the fluid properties, surface tension. Okay, from there mercury does not weight glass. So when it moves up and down in the capillary means the passage through which it is moving, strong cohesive properties of mercury do not allow it to leave any stresses on the inside of the capillary. Okay, mercury does not weight glass because of a strong cohesive force. Because what is the cohesive force? Cohesive force is the force of attraction between the molecules of same in nature. So you will find that cohesive force is more dominant in case of mercury. And because of that one, it will not weight that uh, glass. So it will also not leave any trace on the side of the capillary. Mercury is a liquid metal. As a metal is a high
conductive properties that allow it to be more sensitive than alcohol in glass thermometer. So one disadvantage here it is that it is potentially hazardous. Okay. Or that means your mercury is hazardous in it. If the glass container is ruptured, that means it will affect the environment as well as also the man in operation. Then to avoid that toxic hazardous substance like mercury, to avoid that we are using alcohol in glass thermometer. So as a liquid utilize ethyl alcohol, toluene and technical pentane, which can be used down to minus 200 degrees centigrade, and its range is from minus 200 to 80 degrees centigrade. Only one advantage here is that if you are using alcohol as your thermometric substance, it can measure very low temperature, but disadvantage is that it can wet your glass tube or that glass because having less cohesive force. So what is the causes of inaccuracy in case of liquid in glass thermometer? So these are the possible causes of inaccuracy. One is temperature difference in liquid. Glass temperature also affect, that means your glass temperature or liquid in glass thermometer, glass temperature also affects that. Amount of immersion. So how much or what portion thermometer you kept inside, that also affect your measurement of temperature, causes of inaccuracy. Then the next one is your bimetallic temperature measuring device. Okay. Work on the principle that different materials have different rates of thermal expansion. Okay. So it works on the principle that different materials have different rates of thermal expansion. So here in bimetallic temperature measuring device, strip of two metals are bonded together. Okay. And when heated, one side will expand more than other. Okay. So the resulting bend is translated into temperature reading by a mechanical linkage to a pointer. So these devices are portable and they do not require any power supply, but they are usually not as accurate as your thermocouple or RTD. Okay, so here you find that it actually your working principle. You have to remember that bimetallic temperature or bimetallic thermometer uses a bimetallic strip which converts the temperature into mechanical displacement. The working of bimetallic strip depends on the thermal expansion property of the metal. Thermal expansion, you know or not? Thermal expansion is the tendency of a metal in which the volume of the metal changes with respect to temperature. आपका कितना वॉल्यूम चेंजेस होता है with respect to temperature is called your thermal expansion. So it works on the principle as already discussed. Two different materials have different rates of thermal expansion. So here this one, but it is it do not require any power supply and usually portable. This principle we have to remember. So you can see this is the bimetallic thermometer. This is the wire, this is the part base of this one, this is the bimetallic strip to different material. The contact point, this is the wire.
So it's a principle we remember, and it's working. We will discuss in the next one. Respond your role. बताओ रे. हसन राजा सर 0 रोल हसन राजा, रमन उज्जवल, अमन उज्जवल, मंडल, सुप्रभात मंडल नहीं है. अरुण सोरेन नहीं है. चलो सीरियल नंबर बोलो जो जो प्रेजेंट हो. सर 1 3 1 6. 3 25 सर, 1 के बाद 2 सर, 25 क्या बीच में हो या नहीं? हाँ. 3 सर 3 नेक्स्ट. सर 19 25. सर 15 सर 24, 19 सर 24, 19 सर 17 sir. सर सर 12 9 17. 19 19 Sir 19 21. 19 15 सर 21. 15 सर 25 सर, 25 सर, 24, 14 15 20. 15 23. सर 58, 23. सर 29 29 34, 34 17. 46 34 ପରେ yes sir, 39 सर 39 39 सर 32 ଥିଲା ସେ ପଳେଇଛି 32 46 46 41, सर 40 सर 42 50 सर 48 45 51 35 सर 54 54 सर 61 Sir ए 17. 61 61 Sir 66. 66 sir. 71 sir, 66 71 सर 66 के बाद 67 सर हाँ सर 60 71 हो गया है. सर 60 60 यस सर 17 sir. 17. हो गया रे, हो गया. हो गया sir. देखो ठीक है sir. और कौन? सर और 72 72 କାଇଁ ତମେ କଣ କହୁଛ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ତାର ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲା ହଁ ଏ ପିଲା ହଁ ଆଉ କିଏ ରହିଲ ରେ? ହଉ ଶୁଭମ ସର୍ଦ୍ଦାର କେତେ ହେଇଯାଇଛି? Anyone left? ସାର୍ 40 sir 68, 40 हाँ हो गया है. 68 भी हो गया है.
Yes, sir. Okay, thank you.